It's match number 14 in Indian Premier League and it's time for bottom of the table contest. On a difficult wicket at Chepauk, Punjab and Hyderabad batsmen will be put to ultimate test. With both sides desperate for a win, quite high are the stakes. Both the teams will have few really difficult decisions to make. On one side there is Mohammed Shami, while on the other we will have Bhuvneshwar Kumar. Both the lethal paces will be raring to go after disappointing campaign so far. Two of the best openers in IPL 2021 are leading their respective sides. It's KL Rahul versus David Warner today as they aim to turn the tides. Thank you everyone for tuning in. This is SportsTiger's mid-innings segment. Today's first game in the doubleheader Wednesday, Hyderabad versus Punjab. और पंजाब एक बार फिर अपने सारे फैंस को काफी निराश करते हुए सिर्फ 120 रन बटोर पाए अपने 20 ओवर में. वैसे तो पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए, दो गेंदें अभी बाकी थी. So yeah, very worrying signs for Punjab. But on the other hand, it was a very inspiring bowling effort by a squad that is yet to have their first win in this tournament. And if they continue with this momentum, they might just get that first win that they're looking for. So इस पहले innings की हम चर्चा करेंगे आगे with my friend and my guest on this segment, Shayanto. Hi Ashwin brother, how are you? I am a little unhappy यार. If you ask me, आज उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी पंजाब से. खराब प्रदर्शन रहा है पिछले कुछ गेम्स में. I was expecting a lot from the new changes. इतने सारे changes करे. आज फैबियन एलन आए, ऑनरीक आए, पिच के हिसाब से लाइनअप चेंज किया गया. But just not getting the results यार, Shayanto. So, but what are your thoughts? Like, if you see the top scorer in this lineup was Shah Rukh Khan with just 22 runs. सिर्फ 22 रन बनाकर टॉप स्कोरर बने इस लाइनअप के आज. So what does that say about this Punjab batting order? You know, look, when you're actually shifting from Wankhede to Chepauk, थोड़ा challenging रहता है transition for teams which are actually trying to win in the league stage matches. थोड़ा challenging रहता है, but Punjab Kings, they have so many quality players. They're led by a quality captain, so you expected something better from them. But 120 runs over here, I don't think so. It's a par score. Maybe 20-30 runs ज़्यादा होते तो par score होता. But as you said, Shah Rukh Khan 22 रन उन्होंने किए हैं. This speaks that he's a very mature player. In fact, even I was formulating my thoughts when the last 5 overs were going on. I was thinking I'm going to talk to Ashwin about this, that this guy needs to bat up higher up the order. You have Nicholas Puran, who has so much power, who has so much humongous, striking abilities under his belt. उसको अब नीचे खेल दो. शाहरुख खान को, who's an anchor, he can also muscle. उनका काफी muscle है, तो he can also muscle the ball. He can also hit huge sixes. So Shahrukh Khan needs to bat higher up the order, in my opinion. Also, I feel that this again, every single game apart from the second game, I feel this highlights the fact that Punjab काफी डिपेंडेंट है केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और क्रिस गेल के ऊपर. देखो, वो तीनों क्वालिटी प्लेयर्स है, बट ऐसा नहीं है कि हर एक गेम में वो खेलेंगे, राइट. एक क्वालिटी टीम का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर आपका एक फिक्स सेट ऑफ प्लेयर्स नहीं परफॉर्म करे, सो देयर विल बी अनदर फिक्स सेट ऑफ प्लेयर्स who will back them. So this again raises so many questions about Punjab Kings. Also, I'm very worried about this team's bowling because I feel that there are only 4 bowlers which they have. Their 5th bowler is Moises Hendricks or Deepak Hooda. So their 5th main bowler is somebody who just, in normal games for their nation, or Deepak Hooda doesn't play, but then in normal times they only bowl 2 overs. So अगर आपका 5th bowling option एक ऐसा bowler है जो part-time bowler है, तो boss, there are a lot of worrying signs for this team.
बिल्कुल। फर्स्टली टॉकिंग अबाउट शाहरुख जी, एक पर्दे पे तो हमने सुपरस्टार शाहरुख देखे हैं, मगर इस स्क्वाड के भी सुपरस्टार शाहरुख खान ही निकल के आ रहे हैं, बिकॉज वही हर गेम में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, एंड एवरीबडी एल्स हैज बीन लेटिंग डाउन द टीम. सो यस, ही हैज बीन द ओनली सॉर्ट ऑफ रे ऑफ होप इन द स्क्वाड. आज अनफॉर्चुनेटली बड़ा स्कोर नहीं लगा पाए क्योंकि बहुत प्रेशर में थे, ऊपर सारी विकेट्स गिर चुकी थी. आपने शायद एक अच्छा सजेशन दिया कि शायद अगर ऊपर आए, उनको और टाइम मिले बैट करने का, तो उनके ऊपर प्रेशर थोड़ा कम रहेगा और बड़ा स्कोर लगाने का शायद मौका ज्यादा मिलेगा. बट ऑन द अदर एंड, अगर हम हैदराबाद की बात करें, तो वहां पे भी एक उभरते सितारे निकल के आ रहे हैं. अभिषेक शर्मा शायद अभी तक बैट से उतना अच्छा परफॉर्म ना करा हो, लेकिन बॉल से तो आज उन्होंने एकदम हैरत अंगेज कारनामे कर दिए. बिकॉज जिस पॉइंट पे वो आए थे, आई थिंक इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ मोमेंट इन दैट गेम, क्योंकि टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो चुका था. यू हैड लॉस्ट गेल, केएल, मयंक, जो हमें मालूम है कि ये स्क्वाड उन तीन बैट्समैन पे कितना डिपेंड करता है टू पुट अप अ रिस्पेक्टेबल टोटल. बट व्हेन दे हैव कोलैप्स, सो इतना प्रेशर था हुडा पे और ऑनरिकेस पे to build a partnership and try and take this game in a winning position. मगर अभिषेक शर्मा जो एक पार्ट टाइम बॉलर हैं, उन्होंने आके दोनों की विकेट्स चटकाई. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट अभिषेक शर्मा एज अ पार्ट टाइम बॉलर कमिंग इन एंड टेकिंग दोस two crucial wickets at a very important stage of the match when Punjab was looking for a partnership? You know that batch of 2018 जो अंडर 19 का था, पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल, that's a golden generation. Mark my words, Ashwin, there'll be a lot of players like Abhishek Sharma, Arshdeep Singh who are going to play for India in the coming days. So this is a very good sign for Team India. But seriously, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से काफी सम अप कर दिया कि अभिषेक शर्मा काफी मैच्योरिटी डिस्प्ले कर चुके हैं. That time a very good partnership was evolving between Moises Henriques and Deepak Huda. So डेविड वार्नर का कप्तानी काफी अच्छी रही है यहाँ पे, एक पार्ट टाइम बॉलर को लाना जो विकेट टेकिंग बॉलर है, एंड मोइसेस हेनरिक्स स्टंप्ड आउट हो चुके थे तब. And so it was a very good bowling display from Abhishek Sharma. You know, after last game, even I was thinking that maybe Abhishek Sharma can be dropped, but pitch ko dekh ke they have persisted with Abhishek Sharma, and that has paid off. That has really richly paid rich dividends. एब्सोल्युटली. आज तो बिल्कुल डिविडेंड्स मिले हैं अभिषेक शर्मा को खिलाने के, और आई होप वो डिविडेंड उनको उनके बैट से भी मिले जिस तरह से बॉल से मिले. बट आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद ऑनरिकेस. अगर आप उनकी बैटिंग देखें, आज उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. हिज जॉब वाज टू स्ट्रेंथन दिस लोअर ऑर्डर, मगर अगर आप उनकी इनिंग्स देखें, आज एकदम कंफ्यूज लग रहे थे अगेंस्ट राशिद खान. बिल्कुल स्पिन पढ़ नहीं पा रहे थे, बिल्कुल भी गेम रीड नहीं कर पा रहे थे. तो आई वाज नॉट सरप्राइज्ड कि अ पार्ट टाइम स्पिन बॉलर टुक हिज विकेट, बिकॉज फ्रॉम द वर्ड गेट गो मैंने नहीं देखा कि ऑनरिकेस बिल्कुल भी बॉल पढ़ पा रहे थे. वो कहीं उनका बल्ला कहीं चल रहा था और बॉल कहीं और जा रही थी. सो या, आई वाज नॉट सरप्राइज्ड व्हेन अभिषेक शर्मा टुक द विकेट, बट अ वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ लूज शॉट बाय दीपक हुडा, who this team is now banking on to get big scores. बहुत ही खराब शॉट और अपनी विकेट बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड अभिषेक शर्मा को दे बैठे. बट जो आज स्टार बॉलर एक्चुअली रहे हैं ऑन पेपर, वो रहे हैं खलील अहमद, क्योंकि उन्होंने लिए 3 विकेट सिर्फ 21 रन देकर. और मैं इसलिए उन्हें स्टार कहूंगा, वैसे तो राशिद खान है इस लाइनअप के स्टार बॉलर, लेकिन आज इसलिए कहूंगा खलील अहमद को क्योंकि ऑफन ही हैज बीन क्रिटिसाइज्ड सो मच. अगर आप देखें, इतने सालों से खेल रहे हैं आईपीएल में, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन अब अपना स्पॉट खो चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे. इतना स्क्रूटनाइज उनको किया जाता है, इतना क्रिटिसिज्म उनको मिलता है. But despite that, today he was again backed by the management and gives a beautiful performance, takes 3 important wickets. What do you feel about Khalil going forward in this tournament? Amazing. These are very good signs for Sunrisers Hyderabad because unke paas he has so many tricks up his sleeve. His slower deliveries, his variations. This has been an amazing start for Khalil Ahmed over here, and एक काफी अच्छा sign भी है उनके लिए because the T20 World Cup is going to be played in India in these conditions. So he's making a very good case for himself in front of the World Cup. So in front of the selectors. So this is a very good sign not only for Sunrisers Hyderabad but for Khalil Ahmed, and उनको टी नटराजन के ऊपर select किया है, and he's reposed David Warner's faith, and I think this is a very good sign for Hyderabad, for Khalil Ahmed. And with this, I think, because
Hyderabad often they've been known for their best bowling attack. You have Rashid Khan, आपके पास भुवनेश्वर कुमार है, आपके पास अभी खलील अहमद भी है. तो पहला 2-3 गेमों में हम लोग उतना कुछ खास नहीं देखे थे इस अटैक से, पर आज के बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि सनराइजर्स हैदराबाद विल बी अ डिफरेंट टीम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इन द टूर्नामेंट. Yeah, I hope so too. Very, very promising signs और मैनेजमेंट बैक कर रही है अपने प्लेयर्स को. आज अगर देखें तो सिद्धार्थ कौल को बैक किया गया ओवर टी नटराजन, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा एक मूव था. बट मे बी दे आर सीइंग सिद्धार्थ कौल परफॉर्म बेटर इन द नेट्स, इसलिए शायद उनको सिलेक्ट किया गया. अब नजर डालेंगे स्कोर कार्ड पे, सो वील गेट टू नो बेटर अबाउट हाउ द मैच हैज गॉन ऑन टिल नाउ. 10 ओवर में सिर्फ 120 रन बना पाई पंजाब. केएल राहुल, मयंक अग्रवाल वो स्टार्ट नहीं दे पाए जिस तरह के स्टार्ट्स के लिए वो जाने जाते हैं. क्रिस गेल यूनिवर्स बॉस ने फिर से डिसअपॉइंट करा, सिर्फ 15 रन बनाया. निकोलस पूरन अगेन गोइंग आउट ऑन अ टक. दीपक हुडा, मोइसेस हेनरिकेज पार्टनरशिप नहीं बना पाए, going for just meager scores of 13 and 14. शाहरुख खान, the only ray of hope, again scoring the highest amount of runs, लेकिन सिर्फ 22 रन बना पाए, बड़ा स्कोर नहीं लगा पाए. फैबियन एलन, इतना प्रॉमिस, इतना टैलेंट, बट कुड नॉट डिलीवर टुडे, सो वेरी डिसअपॉइंटिंग. बहुत जल्दी सिर्फ 6 रन बना के आउट हो गए, वो भी 11 गेंदों में. उसके बाद मुरुगन अश्विन, मोहम्मद शामी, अर्शदीप, इनसे आप वैसे ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि बड़ा स्कोर लगाएंगे. बट बॉलिंग की लेकिन जहां तक बात करें, सच ग्रेट साइन, सच एन इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंस आई वुड से. अभिषेक शर्मा जिन्होंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स ली मिडिल ऑर्डर की, 4 ओवर में सिर्फ 24 रन भी दिए, सो वेरी इकोनॉमिकल. भुवनेश्वर कुमार, ऑलवेज द लीड स्ट्राइक बॉलर ऑफ दिस स्क्वाड, 3 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिए एट द टॉप. खलील अहमद आज बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए एंड शोइंग द मैनेजमेंट व्हाई ही शुड परमानेंटली बी इन दिस 11. अपने 4 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए और 3 विकेट चटकाए. सिद्धार्थ कौल अपना 4 ओवर का कोटा पूरा नहीं कर पाए, लेकिन 1 विकेट ले गए 27 रन दे के. विजय शंकर, एक इंपॉर्टेंट ओवर जिसमें सिर्फ 6 रन दिए और एक बहुत क्रूशियल रन आउट हुआ, जहां पे मुझे लगता है मैच काफी पलटा. You never take on fielders like Warner. That was a huge mistake by Nicholas Puran. और राशिद खान never ever disappoints. The magic man, the go-to bowler, अपने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन और 1 विकेट. बात करेंगे अब नाउ गोइंग फॉरवर्ड, जब हैदराबाद बैटिंग करने आएंगे. हमने लास्ट सीजन देखा शयन, तो जो गेम हुआ था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिमिलर मैचअप पंजाब वर्सेस हैदराबाद, और बहुत लो टोटल था, कुछ 125-126 का जो पंजाब ने बनाया था, मगर हैदराबाद उसको नहीं चेस कर पाया था. इट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम दैट हैपेंड लास्ट सीजन. लगता है कुछ ऐसा आज हो सकता है, कोई चांस है कि पंजाब रिस्ट्रिक्ट कर जाए एंड वी सी अ रिपीट ऑफ लास्ट ईयर? जी, अंदर का जो एंटरटेनमेंट का कीड़ा है ना, that is craving for entertainment, because first innings उतना मतलब कुछ action packed नहीं रहा है. But if you ask in my opinion, I really don't think so Punjab can stage a comeback over here, because 120 is nothing but peanuts, and secondly because उनके पास काफी limited bowling options है. They just have 4 frontline players who can bowl. Their 5th bowling option isn't that great when it comes to proper frontline bowling. So I honestly am putting my money on Sunrisers Hyderabad, but ये चेपॉक है, आपको कुछ भी देख सकते हैं हम लोग. लास्ट बॉल तक we cannot come into any major stark contrasts or maybe stark judgments. So I feel it is Sunrisers Hyderabad, but then we'll see in the mid innings. Yes, I also personally feel that the sun will finally rise today. तो मुझे लगता है कि इट इज हैदराबाद गेम, बट यू ऑल्सो वेरी राइटली सेड कि चिपॉक है, कुछ भी हो सकता है. हमने बहुत फनी चीजें होती हुई देखी हैं इस विकेट पर, लेकिन आज इतना ज्यादा अनुभव इस हैदराबाद के स्क्वाड में, अनलाइक द प्रीवियस गेम्स, बिकॉज आज विलियमसन भी हैं, केदार जाधव भी मिडिल ऑर्डर में हैं, सो लुक्स लाइक अ मोर एक्सपीरियंस स्क्वाड देन द प्रीवियस गेम्स. हेंस expectations from Hyderabad to clinch this one. But yeah, thank you, Shayanto. Thank you for joining me in this discussion. It was fun. And to all the viewers as well, thank you so much for tuning into Sports Tiger. This was the mid-innings segment. The match is still on. It is Hyderabad versus Punjab. And I will catch you once again in the 10 over segment. So stay tuned in. Thank you so much.